Hypothesis formulation. Welcome to Management IQ. Definition of hypothesis formulation. A hypothesis is used to explain a phenomenon or predict a relationship in communication research. Formulating a hypothesis requires a specific testable and predictable statement driven by theoretical guidance and or prior evidence. A hypothesis can be formulated in various research designs. An hypothesis is really a temporary explanation, a kind of educated guess about what will happen under certain conditions. It is a set of logical and statistical guidelines used to make decisions from sample statistical to population characteristic. It can be defined as a logical established relationship between two or more variables expressed in the form of a statement. Moving on to the next advantage and disadvantage of hypothesis. Advantages of hypothesis. It provides clarity to research problem and objective. It describes, explains, or predicts the expected result or outcome of research. It indicates the type of research design, direct the research study process, and facilitate data collection, analysis, and interpretation. On the other hand, disadvantage of hypothesis include dependent on concentration tested, statistical power is influenced by variability, inability to calculate confidence interval, confounded by poorly behaved data, and frequently need to use non-parametric statistical method. Research hypothesis or types of hypothesis. In this, the first one is simple hypothesis. सिंपल हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दो वेरिएबल के बीच में. इन दो वेरिएबल में एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इफेक्ट. एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हाइपोथेसिस आर स्मोकिंग लीड टू कैंसर. इसमें स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंड कैंसर डिपेंडेंट वेरिएबल और कॉज वेरिएबल. सेकेंड पॉइंट इन टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस इज कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. इसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल होता है. इन दिस टाइप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मोर देन टू. एग्जाम्पल स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स लीड टू कैंसर, टेंशन एक्सेट्रा. जब हम लोग क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप बनाने का कोशिश करते हैं तब उसका कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं. एग्जाम्पल higher ratio of unemployment, poverty, literacy lead to crime like deceit, etc. Third point is empirical hypothesis. It is based on evidence. Its data is produced by experiment and observation. Next is null hypothesis. इसमें बेसिकली ये माना जाता है कि कोई भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर भी रहा है तो ये बेसिकली कोई एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से है या सैंपल गलत सिलेक्ट हुआ है. फॉर एग्जांपल कानून के हिसाब से आप तब तक कसूरवार नहीं है जब तक आपके हाथ में कानून कोर्ट को सबूत पेश नहीं किया जाएगा. इसमें नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स होता है. नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ये नल का अपोजिट होता है. व्हेन वी ट्राई टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज व्हाट यू माइट टू believe to be true or hope to prove true. Sixth point is logical hypothesis. It is a proposed explanation using limited evidence. And the last point is statistical hypothesis. It is a hypothesis concerning the parameters or form of probability distribution for a designated population or populations. So thank you for watching the video. Hope you like it.